71% जो H1B वीज़ा के हकदार हर साल होते हैं वो भारत से आते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। और ख़ास तौर पर भारत की आईटी कंपनीज़ जो कि अमेरिका के साथ करीब $200 बिलियन का बिजनेस साल में करती हैं, वो इस की लाभार्थी हैं। लेकिन इस तरह के आवर्जन पर प्रतिबंधित कानून बनाना एक तरह से इन गतिविधियों को अंकुश देगा, लेकिन इसके बदले में इसका प्रतिकार और कई तरीके से हो सकता है। जैसे आउटसोर्सिंग भारत से की जा सकती है उसी काम की, और जैसे और देशों के नागरिकों को या अमेरिका के अपने नागरिकों को भारतीय कंपनियां अमेरिका में नौकरी दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका की खुद की आईटी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका कैसा असर होगा। अगर इस तरह के पैसे दिए जाएंगे तो जाहिर है कि अमेरिका में तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो विदेश से आए हैं ख़ास तौर पर उनके लिए खर्चे बढ़ेंगे, और अमेरिका में आईटी क्षेत्र के लोगों की उपलब्धि पर सवाल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो कटिंग एज की जो क्षेत्र हैं आईटी में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसमें दुनिया भर में प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। दूसरी ओर अमेरिका में तो शॉर्टेज है ही, दूसरी ओर अमेरिका में जो आईटी के क्वालिफाइड लोग हैं, ग्रेजुएट वगैरह, उनकी मांगें, उनकी अपेक्षाएं तनख्वाहों से बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से भी अमेरिका की अपनी कंपनियां भी कोशिश करती हैं कि भारतीयों को या अन्य देश के लोगों को बढ़ोतरी दें, उनको आगे लाएं, उनको पहले हायर करें। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ये जो कदम है, ये अपने बेस, जो मागा का बेस है, उसको खुश करने के लिए किया गया है। उनका दावा है कि अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री इसके पक्ष में है, लेकिन ये दावा कुछ असरदार या समझ में नहीं आता। ज्ञातव्य है कि कल जब ये कदम उठाया गया तो अमेरिका की आईटी कंपनियों के शेयर 2 से 5% घट गए हैं। नैस्डैक टेक्निकल भी घटा है। तो इस वजह से ये कदम कुछ ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करने से अमेरिका की आईटी क्षेत्र को अपने कुछ उसको रुकावट आएगी। ट्रेड डील के बारे में जो टॉक्स हैं वो दोबारा ऑन ट्रैक हैं। पीयूष गोयल की लेड टीम यूएस जाने वाली है नेक्स्ट वीक। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड डील टॉक्स बहुत ही पॉजिटिव और आगे आने समय में सही दिख रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों साइड से अर्ली आउटकम्स आएंगे। किस तरीके से एमईए के इस बयान को देखते हैं, और इसके बाद अगर ट्रेड डील अगर आपको लगता है कि अच्छी जाती है, तो क्या जो हुआ है इंडिया यूएस के बीच में अभी फिलहाल में, चाहे वो टैरिफ की बात करें, तो उसमें क्या आपको लगता है कि ईज मिलेगी? इस बारे में हम लोग कई दौर से गुजर चुके हैं। 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के ख्यातिमान लोगों ने, व्हाइट हाउस के ऊंचे कर्मचारियों ने जिस तरह से भारत को डेमोनाइज करने की कोशिश की, वो भी हम देख चुके हैं। ट्रंप साहब ने खुद ही अपना रुख बदला है। अब वो भारत के साथ समझौता चाहते हैं। भारत ने इस दौरान एक आदरपूर्वक
शांति बनाए रखी और इन अपशब्दों का उसने कोई अनुसरण नहीं किया और ना ही इनका जवाब दिया। तो ये सब देखते हुए व्हाइट हाउस और ट्रेड डिपार्टमेंट के रुख में बदलाव को चिन्हित करना चाहिए। और पिछले हफ्ते एक प्री टॉक्स के लिए अमेरिकी असिस्टेंट ट्रेड सेक्रेटरी, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे और उनके जाने के बाद ये आशा बंधी है कि छठे राउंड की बात हो सकेगी और ये एक अपने में अच्छी पहल है। हालांकि छठा राउंड भारत में होना था, लेकिन वो पिछले महीने उसको स्थगित कर दिया था अमेरिका ने अपनी तरफ से। अब भारत के अगर व्यापार मंत्री अमेरिका जाते हैं तो ये एक अच्छा शकुन है और हमें देखना होगा कि इसके पीछे अमेरिका के रुख में कुछ लचीलापन और बदलाव है और भारत के प्रति जो उसने एक कठोर कदम 2 सतहों पर उठाए हैं, 25% रिटेलिएटरी टैरिफ और 25% सेकेंडरी टैरिफ रूस से तेल खरीदने के आरोप में, तो ये सब लगता है कि इनके ऊपर कुछ लगाम लगेगी और अमेरिका ये एक पक्षीय और निराधार कदमों से पीछे की तरफ हटेगा। ने कहा है कि सऊदी अरेबिया's decision to sign a mutual defense pact with Pakistan will have far-reaching consequences for South Asia, particularly India. उन्होंने ये भी कहा है that South and Pakistan defense pact will change life for India. तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन को कैसे समझते हैं? ये संभाव्य है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मुझे अचंभित करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत के विरुद्ध सीधे पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। उसके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारतीय जो लोग हैं उस देश में वो सबसे ज़्यादा बड़ी डायस्पोरा है और उनको इज्जत से देखा जाता है और उनकी कार्यक्षमता पर की प्रशंसा की जाती है। तो ये सब देखते हुए मेरी निगाह में तो ये लगता है कि ये समझौता सिर्फ ऑप्टिक है, इस दिखाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान ईरान या यमन या इजराइल से लड़ने वाला नहीं है सऊदी के पक्ष में। इसी तरह सऊदी भी पाकिस्तान में को फौजें या हथियार भेज करके भारत, अफगानिस्तान या ईरान से लड़ने वाले नहीं है। तो ब्रेमर साहब को कि जो उनका बयान है उसको मैं रेखांकित करता हूँ, लेकिन मेरा जो वास्तविकता के एवज में, वास्तविकता के आधार पर मेरा जो पकड़ है वो कुछ और ही कहती है। तो पाकिस्तान के डिफेंस बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इफ नीडेड बी आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन बी गिवन टू साउदीज। तो ऐसे उन्होंने ये स्टेटमेंट, ये बयान, एक पाकिस्तान का जियो टीवी है उसमें उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। किस तरीके से देखते हैं कि वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या न्यूक्लियर हथियार खील बतासे हैं जो कि जिसको चाहे खैरात में बांटे जा सकते हैं? आपको याद दिला दूं, 3 महीना पहले पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे थे कि ईरान पर अगर इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसकी रक्षा करेंगे। इस बयान को देने के बाद इससे मुकर गए। इसी तरह से वो कई बार इन सब चीज़ों को कह चुके हैं। पाकिस्तान के
को बड़ी मुश्किलों का सामना है, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और आंतरिक सुरक्षा के तौर पर, और पाकिस्तान इनको दरकिनार करके इनके ऊपर मुलम्मा चढ़ा करके ये दिखाना चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है और उसका दबदबा पूरे इस क्षेत्र में, साउथ वेस्ट एशिया में कायम है, और सऊदी को वो ज़रूरत पड़ने पर दे सकता है न्यूक्लियर हथियार। क्या अमेरिका और इजराइल ऐसा होने देंगे? ये सब सवाल अपनी जगह हैं, और इनको देखते हुए मेरा जो आकलन है वो तो ये है कि ये सब बयानबाजी हमेशा की तरह न्यूक्लियर वेपन्स को खील बतासे बना करके बांटने की ज़रूरत करने के वालों के पास है, वो असल में करने वाले नहीं हैं। स्पोक्सपर्सन शफकात अली खान ने एक वीकली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री रिमेन्स कमिटेड टू पीस, रीजनल स्टेबिलिटी एंड अ मीनिंगफुल डायलॉग फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या कहेंगे? कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबल देश, उत्तरदायित्व वाले देश होते हैं तो वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, और अगर पाकिस्तान ऐसा करे तो उसका उत्तरदायी होना सिद्ध होगा। अभी तक इस बारे में संशय है। Trump signed a $100,000 annual fee on H-1B visa. How do you see this decision, and how do you think will impact it to the people? I think it's a two-edged sword. At one end, it is there to please his MAGA base, where it's often exaggeratedly alleged that foreigners are taking away well-paid jobs in United States that American citizens should be doing. Examples are cited that companies are firing American citizens only to get H-1B personnel. It is not often clarified whether this is due to lower wages or higher efficiency or greater professionalism of H-1B people. America, particularly in the IT and new technology sector, is a highly competitive country, and it is a highly innovative country. It needs talent, and by putting such odious restrictions, Americans are not serving their own IT industry. I don't know whether this would hamper their IT innovative skills. On the other hand, coming to India and its impact, I think our IT companies were major beneficiaries of H-1B visa scheme. The Indian passport holders were 71% of the total beneficiaries of H-1B scheme last year, and majority of them were from IT background, and a largest chunk of them was by Indian IT companies for their offices in United States. So this may have an impact on Indian companies who count United States as their biggest market for IT outsourcing. To deflect this kind of restriction, I think multiple strategies would be required. Firstly, outsourcing the work to India would increase. Secondly, local hiring of Indians who are already there, or foreigners or American nationals
would increase instead of bringing people from India. And I think there is also likelihood of a judicial review of this decision, because this apparently does not conform to the powers of United States government. They can charge fees to compensate them for the processing of the visas, but to fine a company for importing foreign workers is something that needs and may be questionable legally. On trade deal talks has said that India-US trade deal talks positive and forward-looking, both sides pursuing early outcomes. The atmosphere has undergone a welcome change from the United States side. India has been subject in the past to invective-prone comments such as tariff kings, such as the partnering Soviet Union partnering Russia, and so on and so forth. Blood money and whatever, those kind of words which are non-complimentary and unsuited for diplomatic discourse were used with liberty by the United States responsible people, many of them in the higher echelons in the White House itself. President Trump himself have been repeatedly speaking with a forked tongue, on one hand praising India, on another hand denouncing us as tariff kings, as something that they needed to be punished, as somebody who stopped the war between India and Pakistan and all sort of things. As it happens, those kind of interventions, at least in public, have stopped, and more saner counsel has prevailed. Last week, American assistant trade negotiator was here to resume bilateral conversation on this dispute about high tariffs that Americans have imposed on our exports to their country. And now we are told that the next round of talks, which was suspended last month by the American side, would be held in Washington, and our foreign trade minister would be traveling there. I think it shows a sign of greater flexibility and appreciation of the damage to be undone by the United States in its ill-considered move. Geopolitics that Saudi Arabia's decision to sign a mutual defense pact with Pakistan will have far-reaching consequences for South Asia, particularly India. How do you see this comment? I note what Mr. Bremer has said, but in my opinion, Saudi Arabia and Pakistan have signed in the past 75 years at least 5 such defense agreements, and the impact on India has not been perceptible through all this course, and I have reasons to believe that even this agreement would stay as an insurance policy for the defense of Saudi Arabia largely, and Saudi Arabia has already indicated through their pronouncements that they would like to balance their relations with India and Pakistan and contribute to the peace and stability of South Asia. I think
Saudi Arabia has lots of reasons to uh, be friends with India. We are their second largest trading partner. The trade is hugely in their favor, and we are the second largest buyer of their crude. We are the only major country where crude consumption and import is rising. All other major countries, the consumption is either stagnant or falling. So I think there is a scrimmage for Indian oil market, and Saudi Arabia knows it. Sir, the Defense Minister has responded to a question that was asked to him, that was asked to Khwaja Mohammad Asif. He said, "Let me make one point clear about Pakistan's nuclear capability. The capability was established long ago when we concluded tests. Since then, we have forces trained for the battlefield. What we have and the capabilities we possess will be made available to Saudi Arabia." Apart from that, he also said that if either Pakistan or Saudi Arabia is attacked from anywhere, it will be considered an attack on both nations and will respond together. How do you see his remarks, sir? I note his remark. I think there's nothing new in it. But I also want to bring on board that this same country's generals 3 months ago were promising to defend Iran against Israel by offering nuclear weapons to Iran, an offer that was quickly withdrawn. Pakistan is quite prone to talk loosely about nuclear weapons, but they also realize that these are strategic arsenal, almost never to be used, and there is no documented transfer of nuclear weapons from one country to another in the mankind's history of last 75 or 80 years since the nuclear weapons were discovered or created. So I believe this to be a braggadocio and to be taken at its face value. Lastly, sir, dialogue on Kashmir and other issues. This has been said by Pakistan Foreign Office spokesperson Shafqat Ali Khan. Well, diplomats are supposed to lie hard for their country, and this is an example where a Pakistani diplomat has hard lied about his country's posturing. They pretend to be responsible, they pretend to be peace-loving, but what they do below the surface is what we know from Pahalgam and other incidents, from pronouncements of various militias engaged in terrorism, not only against India but across the world, on their soil, from the history of Osama bin Laden being found living in Pakistan quietly, and before he was assassinated by Americans. So we all know the truth, and Pakistan would be well advised to do what it says.